अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका ब्यूरो चीफ साउथ कोरिया से एम शारिफ सईद ला रहा हूँ आपके लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़. स्टे ट्यून्ड, OPTV Global. If you have any news around the South Korea cities, please contact me. The 19th Asian Oceanic Society for Pediatric Radiology as per Congress to be held on September 26-28, 2019 at Seoul, Dragon City, Seoul, Korea. ASPR was first of its kind, originally founded at Tokyo, Japan in 2000 to share the experience and knowledge in the pediatric radiology field in the Asian region. After the second meeting in Adelaide, Australia, the organization was expanded to include Oceanic counterpart. The third meeting, which was assembled Seoul, Korea in 2003, has achieved a notable success with 224 participants from 12 countries. Looking back to the history of ASPR, Korea is proud to be host the 9th ASPR for the second time in Seoul. Under the slogan of a better imaging for our children, better imaging for our future, various programs will be prepared, including the plenary lecture, a special focus session on a good clinical practice in a pediatric radiology, future of a pediatric imaging, and skeleton dylasia, as well as exhibition and social program. The latest achievement, experience, and knowledge will be shared, and expect lively discussion on a future of the pediatric imaging. Building an international network will also be a key component of this meeting to be provide quality care beyond border. ASPR 2019 will help all members of ASPR and participants to solidify our friendship as well as professional collaboration. Room folder, and I chose some cases that I thought were important to show and share with you, and some important. They each have more or less important teaching points. Basal ganglia, remember, super important. Look at that hypogenicity. Get accustomed, get used to look at it. Everyone looks at ventricular size. Actually, it's the least useful. And we are going to see some examples. If you look carefully, here is difficult with the regular transducer. When you put the linear and these focus magnified views, you clearly see that this is not the same hypogenicity like this one. And when we did the MRI, we see that area of hemorrhagic infarction on that right basal ganglia. And talk about the practical imaging approach to urinary tract infection in children. This is my personal recommendation for the participants from the overseas. But sometimes I had difficulties to really showing the twinkling artifact, even if 0.5 centimeter of the stone. Is there any specific parameters that the sonography used for the? So I don't know of any specific parameters, but I do know that it can be very tricky to show the twinkle artifact, especially in children, because Doppler imaging is so susceptible to any kind of motion. So even some respiratory motion can make it very difficult to demonstrate that twinkle artifact. So I wonder if that might be part of the challenge, but I don't know any specifics about any numbers or specifics. Spain from JP Surge 2018 showed the left-sided intussusception to be assigned, and another one from Malaysia showed anemia and increased platelets were associated with poor chance of reduction. So we'll keep those in mind. This is just the same 14-year-old boy with Burkitt lymphoma showing a small bowel intussusception when he got sicker, and the small bowel wall tumor seeding that you see in those patients. And we will have a postgraduate course the first 2 days between the 1st and the 2nd of June, and then annual meeting from 3rd to 5th of June. So Marseille is in south part of France here. It's possible. The machines are quite expensive. In the States, a new CT scanner runs approximately 1.2 million US. Okay. A new MRI scanner approximately 2 million US. 2 million US. So this is the sort of thing that I believe in developing countries that would require government subsidy
for purchase. You know, sir, in Asian, some countries, the 2 million is making the full new hospitals. Yes, yeah, absolutely. And that's 2 million in the U.S. I imagine that there would be transportation costs and markups, so maybe double the cost. It's increasing, and it's interesting for me to see the attendees here from more developed countries as well as underdeveloped countries. But the enthusiasm of the attendees from underdeveloped countries is great. It is fantastic, and I'm so glad to see that, because these people will come here, see what is being done, and then go back to their home country and be able to be advocates for children, utilizing not only new technology but older technology. And that increases the health of children worldwide, which is the goal of a conference like this. So this equipment is manufactured from America and where? Is it from Europe? Where is making this machine? Well, they're manufacturers made worldwide. A lot of this equipment is made in the United States. A lot is made in Europe. And of course, a lot of technology companies are based in Korea and Japan. So the technology is being manufactured and is available worldwide. So this is an event for radiology, basically X-rays, scans, MRIs, but specifically for children. So children, the age group, we're talking about newborns to maybe about 11, 12 years old. And for some people, it extends to the adolescent age group, which is about 15 to 50. So we just basically to learn. Some of us have submitted some case studies, case reports of interesting cases that we have sculpted some reports and make posters out of it. And just a lot of large panel of experts from all over the world, mostly Asian countries, who come and basically talk to lectures on the latest developments on pediatrics. I wouldn't say that. At the end of the day, if you're sick and you need it, doesn't matter whether or not, I mean, my ultrasounds and my scans aren't going to cure your disease. It's just to help us narrow it down and pinpoint exactly what's wrong. So we can help our colleagues, for example, surgeons, other X-ray medicine specialists, so that they can just target whatever treatment to that specific case rather than something, do something that is very broad and not really hitting what we want. So at the end of the day, our job is to help our colleagues. I cannot answer the question for the local area for Korea or for Asia. No, Korea is okay. I can talk about the United States. But this is rather expensive in the United States. Probably the most expensive tests are being performed in the United States, even though they are the same tests. Yes, sir. Because of the medical environment, because of the payer mix, these tests are unfortunately very expensive. Very expensive. Even though they are the same tests. So, sir, I ask you why this is the Asian countries, you know, Sri Lanka, Pakistan, India, Bangladesh, Bhutan, not many in South Asia. Of course. So, in here, really the problem is the medical point of view, medicines and hospital standards, you know. So, majority is government not supporting as a local hospital, municipal hospital. So, sir, it's not easy. The test is new technology. Everybody. It is correct. It's not right. It's not easy. Right. These are very big investments. Yes. So access is a big problem pretty much everywhere in the world. I can give you an example from Canada, for example. Yes, sir. We think Canada as a developed country, which is a developed country, but accessing to these tests is not easy in Canada either. People wait in line for some time to get to this. In the United States, it's different. Getting an appointment easy, but paying for it is not easy. ये कॉन्फ्रेंस मोस्टली अवेयरनेस और एडवांसमेंट्स जो पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी में हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी इंफॉर्मेशन को पूरा गैदर करते हुए उस नॉलेज को डिसेमिनेट कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, एक्सेस टू नॉर्मल पब्लिक कैसे हो, उसके लिए जैसे अभी इतनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं. पीडियाट्रिक्स जो पॉपुलेशन है, इट इज़ नॉट अ मिनिएचर एडल्ट. छोटे एडल्ट नहीं है, वो डिफरेंट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है. उनमें रेडिएशन डोज जो एडल्ट्स में होती है उसके मुकाबले पीडियाट्रिक्स में काफ़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग सेल्स होते हैं बॉडी में. इसलिए मेन उसको फोकस करते हुए
कि उसमें रेडिएशन डोज कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या नई टेक्निक्स जो आ गई हैं कुछ बीमारियों के लिए, उसको देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी मेरी आपके साथ साथ डॉक्टर क्रॉक से बात हुई, उन्होंने लेक्चर भी दिया, अभी अमेरिका से वो हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि जनाब एशिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनको गवर्नमेंट्स उन हॉस्पिटल्स को हैंडल नहीं करती, ऑपरेट नहीं करती, प्राइवेट्स हैं ज़्यादातर, और उसमें जो हमारी जो एशिया के ममालिक के जो लोग हैं, वो जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स की जो फैमिली है, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं उन टेस्टों को? जो इससे पहले तो ठीक है MRI था, सिटी स्कैन था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब ये न्यू टेक्नोलॉजी है अमेरिका में या कनाडा में, या तो उन्होंने कहा हाँ ये महंगी तो है और हमारे अमेरिका में भी महंगी है, तो आप इसको देखते हुए क्या कहते हैं, क्या ये वक्त के साथ साथ ये नीचे आएंगे इसके प्राइस, या हर आदमी तक इसकी सहूलत पहुंचेगी? मेरे हिसाब से अफोर्डेबल टू जनरल पब्लिक है और ऐसा नहीं है कि टोटली आउटरीच है। इट्स जस्ट द मशीन्स की जो कॉस्टिंग है, जो प्राइसिंग है, वो इनिशियल परचेज में ज़्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको सब्सिडी दे सकती है। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट अस एंड डेफिनेटली इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टोटली आउटरीच है। जो पहले जो नॉर्मल सिटीज़ के 2000 में हो रहा था, ये नई मशीन आने से कोई उसका 3000 या 4000 प्राइस नहीं होने वाला। इट्स जस्ट यू अपग्रेड योर इक्विपमेंट्स। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जनाब अगर आपने अपनी कंट्री की नेशन को बेहतर वो फ्यूचर देना है, गुड हेल्थ देनी है, तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो उनको सब्सिडीज़ दे या उनके लिए क्लियरेंस के मामले में छूट दे, कस्टम्स के बारे में। डेफिनेटली बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हेल्थ केयर आगे आ ही नहीं सकता। नहीं डेवलपमेंट हेल्थ केयर अगर आपको डेवलप करना है कोई भी नेशन का, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का विजन। अच्छा, तो देखा जाए ये 3 रोज़ की जो कॉन्फ्रेंस है, तो आप समझते हैं बड़ी फ़ायदेमंद है, जो इसमें लेक्चर्स को अराउंड, मतलब पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है और वेस्ट के भी मैंने कुछ मुल्क देखे हैं, ये सब लोग आए हैं, बहुत सारी कंट्रीज के मोर देन 200 गेस्ट हैं, तो ये एक तरीके से एशिया के लिए अच्छा इवेंट है। डेफिनेटली, क्योंकि ये एनुअल इवेंट है, तो हर साल एटलीस्ट आप लेटेस्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी से अपडेट होते हो। जी। कॉन्फ्रेंसेज ही वो मीडियम है जिससे आप अपडेट कर सकते हो अपने आप को, तो डेफिनेटली यूजफुल। और इस इवेंट में तकरीबन 200 डॉक्टर्स ही हैं। हाँ, सारे डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स हैं, तो वेरियस रिसर्च वगैरह भी क्या हो रहा है, इन रिसर्च को क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, गुड, तो उस पर भी डिस्कशन है यहाँ पर। इट्स डेफिनेटली गुड एनुअल इवेंट है, अपडेट करने का यही तरीका है। थैंक यू। आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कोरिया का आज आपका विजिट है, पहला विजिट है जी, कोरिया में ही गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको आपने अटेंड भी किया है, इसमें आपके पेपर्स भी थे, तो आप मुझे बताइए इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्या थी कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ पाकिस्तान को, तो आई एम द डेलीगेट फ्रॉम द पाकिस्तान। ये हमारे 2 पेपर्स थे जो साइंटिफिक पेपर्स थे जो एक्सेप्ट हुए थे और एशियन ओशियानिक सोसाइटी के में रिप्रेजेंट हुए थे। एशियन ओशियानिक सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है एक रेडियोलॉजी की, जिसके अंदर पीडियाट्रिक सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट कर रहा था एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान थ्रू दैट। एंड ये सोसाइटी का पर्पस ये होता है कि दुनिया भर में जितने भी हाईली स्पेशलिस्ट लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हों और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, देयर एक्सपर्टीज टू इम्प्रूव द पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी। पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी इज़ अ फील्ड जिसमें हम बच्चों को लेकर खासतौर पर उनकी रेडियोलॉजी और उसमें जो एडवांसमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी टू अंडर 18 जी, ये पीडियाट्रिक का मतलब होता है कि न्यू बॉर्न से लेकर 18 साल तक की एज, जो कि खास बिग पॉपुलेशन है हमारी, उसकी रेडियोलॉजी को हम और उसकी इमेजिंग को हम कवर करते हैं। तो अच्छा ये बताइए इसको देखने वालों के लिए कि जैसे हमारे यहाँ CTC है, MRI है,
या इस तरह के और बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ये नई टेक्नोलॉजीज में प्लस है दुनिया में हुई है? देखिए ये वही टेक्नोलॉजी है, ये तो नहीं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो न्यू एडवांसमेंट आती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर वी डिस्कस द न्यू टेक्नोलॉजी, यू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, यू टीच द न्यू टेक्नोलॉजी टू अदर्स एंड यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, योर प्रैक्टिसेस, द एडवांसमेंट द प्रैक्टिसेस विद ईच अदर एंड लर्न विद ईच अदर। अच्छा, साथ साथ देखिए अब इस बात आपने एक्सप्लेन किया और माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से आपका ताल्लुक़ है, और ओवरसीज़ के लोगों का हमारी जो दुनिया में पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं उनको थोड़ा सा आप ये बताइए कि जनाब पाकिस्तान में ठीक है एशिया में है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं, अब मुझे गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स का तो इतना नहीं पता, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और यकीनन आप भी बहैसियत डॉक्टर बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जानती हैं, आपका राब्ते में होंगी आप उनसे, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी या ये इक्विपमेंट्स आ गए हैं या आने की उम्मीद है? देखिए आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, या वो ओशियानिक या एशिया के किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान किसी से लैग नहीं कर रहा। Alhamdulillah, we are having every technology with all the advancement. That's the reason we can represent our country, and we are representing our country. तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं, बस we need to have more people to come and represent the Pakistan. तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज़ यहाँ हो रही है और ऐसा नहीं है। पाकिस्तान is fully equipped and advanced country in the field of medical imaging. तो इसमें देखिए आप मुझे बेहतर बता सकती हैं, जो पाकिस्तान में देखिए मिडिल क्लास, मैं कहूँगा, मैं बहुत नीचे तो नहीं लेते जाऊँगा कि जी गरीब हैं या मिडिल क्लास, तो क्या ये लोग अफोर्ड कर लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर टेस्ट होना या इस पे जो इनके इलाज होते हैं या डायग्नोज किया जाता है? That's something which is still challenging, as we know कि हमारे पास more than 50% people of पाकिस्तान के पास कोई social security network system नहीं है, and the lack of this social security network system is the major cause when not everybody can have the same facilities. So the cost is the biggest issue in the Pakistan, but with the in the last 10 years, these advancements, these new technologies have come into the in the government sectors as well, and now these are easily in the approach of the poor people as well. अच्छा, देखिए अभी आपने बड़ी प्यारी बात की, यूरोप में है, इंग्लैंड तो दुनिया में मशहूर है, साउथ कोरिया में हम हैं, हमें यहाँ का भी पता है, आपने सोशल सिक्योरिटी बताया, तो अब तो जैसे न्यू गवर्नमेंट्स आई है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, तो ये KPK से कुछ सिलसिला शुरू हो गया है कि जी मेडिकल्स के जो इंश्योरेंस कह लें, या गवर्नमेंट $5,000 इक्वल टू 6-7 लाख रुपया पहुँच जाता है, तो ये अब आई होप कि जनाब दूसरे प्रोविंस में भी आएगी पाकिस्तान के, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? जी जी बिल्कुल पड़ेगा। ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है KPK में, एंड बहुत हद तक पंजाब प्रोविंस में भी हो गया। सिंध थोड़ा सा लैक कर रहा है इस मामले में, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन कमिंग 5 years की ये इम्प्रूवमेंट। ये सूबाई और नेशनल गवर्नमेंट्स का मसला है या political? We all know about the political situation. There is slight instability in the Pakistan in regards of politics. So this political instability is also reflects in the health ministry as well, but again कहीं ना कहीं से तो start होना था, तो it has started from the KPK. It has its approach in the Punjab now, and now it's a turn for, I'm looking forward in the Sindh as well. देखिए अब माशाल्लाह मेरे बहुत सारे दोस्त रहे, आज भी हैं, हम ओवरसीज़ में वर्ल्ड में देखते हैं, UK में देखते हैं, अमेरिका में, हमें डॉ मेडिकल के, सिंह मेडिकल के, किंग एडवर्ड के हम देखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ लोग अंदर से मायूस से हो जाते हैं, तो वो फिर अमेरिका और दूसरे वेस्ट में चले जाते हैं। इंग्लैंड में हमने देखा पाकिस्तानी डॉक्टर, और बड़े जीनियस होते हैं, तो माशाल्लाह आप दुनिया में ट्रैवल भी करती हैं, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करती हैं, सब कुछ है, वर्कशॉप अटेंड करती हैं, और आप पाकिस्तान में इस फील्ड से वाबस्ता हैं, और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि जनाब अपने होम टाउन के अंदर बैठ के, अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खिदमत कर रही हैं, और उसके साथ साथ आपको इर्द गिर्द आपके साथ जो आपके दूसरे डॉक्टर्स ग्रुप्स होंगे पैनल्स के अंदर, आपके दूसरे साथी होंगे, तो वो क्या पर उम्मीद हैं जिस तरह दुनिया डेवलप कर रही है मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर, ख़ासतौर पे आजकल तो आपको पता है इक्विपमेंट्स वगैरह ऐसे आ गए, तो उनको लगता है कि जनाब हाँ जीनियस तो हैं कि ये चीज़ें हम तक मैसर होंगी, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देगी ऐसी, या कस्टम वगैरह के मामले में कि वो इजीली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भी मंगा सकते हैं?
This is something which is quite political and quite government-based, but I'm very hopeful. वहाँ पे लोग आते हैं और सब बाहर से ही ट्रेंड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मायूस होके चले जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो खुशी से आके खुशी से अपनी कंट्री में ट्रेन बाहर होकर आके काम करते हैं, तो ये सिलसिला तो चल रहा है. तो आप समझती हैं कि आपने जो कॉन्फ्रेंस और स्पीकर्स, अमेरिकन स्पीकर्स थे, इंग्लैंड की स्पीकर्स थी, लोकल स्पीकर भी थे, तो आप समझती हैं कि जनाब इसमें मेजॉरिटी में मैंने देखा मलेशियन से बहुत डॉक्टर्स थे, इंडोनेशिया से बहुत थे, इंडिया से भी थे, पाकिस्तान से माशाल्लाह आपने रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान की तरफ से अपने तौर पे ही, बड़ी खुशी की बात है. तो हम पर उम्मीद रहें कि जनाब ये टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है कि पाकिस्तान में भी होगी. जी हाँ, बिल्कुल. ये हमारे बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सोसाइटी, तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट. इंशाल्लाह इन द कमिंग 5 years we'll be hosting this conference in our country as well, or India, Indonesia, Malaysia, because this the Asian Society was made in these countries. तो पाकिस्तान की तरफ से इसकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, and inshallah I'm looking forward in coming 5 years to host this conference in our country as well. आज हमारे साथ किरण हिलाल साहिबा मौजूद थी और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला कॉन्फ्रेंस के बाद और हमारे साथ ओवरसीज़ OPTV से बात की. सो नाज़रीन इकराम, ये हम कोशिश करते हैं साउथ कोरिया में पाकिस्तान के हवाले से कोई हमारे अच्छे डॉक्टर्स आएँ, इंजीनियर्स हों या यूनिवर्सिटी के कोई अच्छे इवेंट्स हों जिसमें पाकिस्तानी कोई कारकर्दगी दिखाते हैं, या ट्रेड के हवाले से हो या पाकिस्तान से कोई डेलीगेशंस हों, तो हम आपको उनसे मुतारिफ़ कराएँ. तो किरण हिलाल साहिबा का मैं बहुत बहुत एक बार और शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू आपका. कि आई होप कि इन फ्यूचर में भी आप कोरिया आएँ तो OPTV से रब्ता करेंगी और जहाँ भी दुनिया में जाएँ तो पाकिस्तान की इसी तरीके से आप उसको रोनुमाई करें, पाकिस्तान के बारे में बताएं, पेपर्स पढ़ें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.